Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. And this video is for class 7. Today we'll start the second chapter of history for revision of periodic test 1. So our second chapter of history is rise of kingdoms. So let's continue with the chapter. Medieval period, many dynasties ruled over India. मध्यकालीन के दौरान बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया इंडिया पे एंड दैट टाइम वी डिवाइड आवर कंट्री इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न पार्ट, द नेक्स्ट वन इज डेक्कन प्लेट्यूज और डेक्कन रीजन एंड द थर्ड वन इज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो अकॉर्डिंग टू these parts or these regions, means northern, Deccan and southern, will divide our dynasties, and one by one will come to know about these dynasties, that how they ruled in our country during the medieval period. So we'll start with the North India. So in northern India, the Rajputs, the Ghaznavids, the Ghorids, the Palas, the Gurjar Pratihars ruled over, and they were the most powerful dynasty in the northern region of India. And in the south, the Pallavas, the Pandyas and the Cholas were the main powers, and in the Deccan region, the Rajputas and few smaller kingdoms were there who were more powerful. Now let's continue with the northern India and the first dynasty in northern India, that is the Rajputs. Who were Rajputs? Rajput कौन थे? तो the word Rajput comes from the Sanskrit word Rajputra. राजपूत जो शब्द है वो हमें संस्कृत के शब्द राजपुत्र से मिलता है. राजपुत्र, which means the son of king, राजा का बेटा. That is known as Rajputra or Rajput. Whereas historians have different opinions about the origin of Rajput. Rajputs के origin के बारे में historians का अलग अलग मानना है. That who were the descendants of Rajputs. Most of the historians consider them as the warrior class or Kshatriyas of the Vedic period, कि ये वैदिक एरा के क्षत्रिय थे, warrior, योद्धा. And the descendants of their descendants were from Central Asian tribes settled in India after the Hun invasion. और इनके जो पूर्वज थे, डिसेंडेंट कहाँ से थे? सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, मध्य एशिया से. एंड अकॉर्डिंग टू सम राजपूत क्लैन, दे वर सूर्यवंशी. कुछ राजपूत क्लैंस का मानना था कि ये क्या थे? सूर्यवंशी. सूर्यवंशी बिलोंगिंग्स ऑफ सन फैमिली, मतलब सन की फैमिली से बिलोंग करने वाले सूर्यवंशी. एंड अकॉर्डिंग टू समवन दे वर द वंशी, मीन्स बिलोंगिंग टू मून फैमिली. एंड कंसीडर देमसेल्व एज पार्ट ऑफ फायर फैमिली, मीन्स अग्निकुल. और कुछ राजपूत क्लैंस का मानना था कि वो फायर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब अग्निकुल. सम बिलीव दैट दे वर बोर्न आउट ऑफ फायर, सैक्रिफाइसल फायर. Now some important Rajput clans that ruled during the medieval period. So the first clan that ruled over northern part of India is Tomars, then Chauhans, then Solankis, then Paramars, Gadwals and the Chandels. Now who were Tomars? Tomars established a powerful empire in the Delhi region, and they established the city of Delhi. That time it was known as Dhillika. तो इन्होंने
एक सिटी स्टैब्लिश की जिसका नाम था दिल्ली का, जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. The next one is Chauhans. The famous ones, we all know Chauhans, and the most powerful ruler of this dynasty was Prithviraj Chauhan. And now the Solankis. Solankis were also called the Chalukyas of the Gujarat. Now the next one is Paramars, and Bhoj Paramars was the most powerful ruler of this Paramar dynasty. Next one is Gadhwals, and Gadhwals administered or governed the region near the Kannauj, around the Kannauj. And the next one is Chandels. Chandels, their region was from around the river Yamuna, between the river Yamuna and the river Narmada. And the next two class, that is the Palas. So the Palas ruled over the region of present day Bihar, and the next one is the Gurjar Pratihars. The Gurjar Pratihars, they ruled over the parts of Rajasthan and Gujarat. Now our next one topic is administration in the early medieval period. So what was the rules and regulations and administration, प्रशासन कैसा था early medieval period में? So the king has the main power in the kingdom. तो राज्य में सबसे ज्यादा जो पावर होती थी, जो मोस्ट पावरफुल पर्सन होता था, वो कौन होता था? किंग. So king has the main power in the kingdom, and the king was titled by the प्रपत्रक. किंग को किस नाम से टाइटल किया गया था, उपाधि दी गई थी प्रपत्रक. That time also each department has different ministers. Like nowadays we have different ministers for different departments. Like minister for railways, for healthcare facilities, for women's welfare. अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स जैसे कि आज के टाइम में होते हैं, उस समय भी अलग अलग डिपार्ट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स नियुक्त होते थे. The most important minister was called महामंत्री, और जो सबसे important minister होते थे उनको कहते थे महामंत्री. Now we'll talk about kingdom. So the kingdom was divided into bhuktis. So like nowadays our country is divided into different states. So that time the kingdom was divided into bhuktis. And bhuktis were divided into vishyas, and vishyas were divided into village. So the kingdom was the largest unit, and the village was the smallest unit of the kingdom. राज्य का जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो क्या होती थी? village. किंगडम को भुक्तीज में डिवाइड किया गया था, भुक्तीज को विश्यास में और विश्यास को विलेज. And who was the headman of the village? The headman of the village was known as Gramapati, who was the head of the village. To look after the local schools, water tanks, temples and road villages also had different committees which worked in cooperation. और इन सारे local डिपार्टमेंट्स को देखने के लिए भी वहाँ पे कॉपरेशंस थे, लोकल कमिटीज थी जो हेडमैन को असिस्ट करती थी या उनके साथ इन सारी चीज़ों की देखरेख में काम करती थी. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज सोशल लाइफ इन द अर्ली मेडिवल पीरियड. सामाजिक जीवन कैसा था लोगों का मध्यकाल के दौरान, एंड व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ पीपल एंड वुमेन्स इन द सोसाइटी. We'll come to know in this topic. So the basis of the social life of the Rajputs was the caste system. तो कहीं ना कहीं जो राजपूत्स का मेन फोकस था या मेन उनका आधार था सोशल लाइफ का, वो बेसिस क्या था? कास्ट सिस्टम. सो Al-Biruni also described in book Tehkeek-e-Hind that caste system was very rigid during the medieval period. And the position of women declined during this period. And what was the reason behind this? Why the position of women declined during this period?
The first reason was sati pratha and child marriage, which was experienced on a large basis. तो उस समय में सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, या उस समय लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे इस चीज़ को. एंड दिस वॉज द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ विमेन्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. सो द स्टेटस ऑफ मेन्स was high in the society and the position of women's were down or decline. Because of these reasons, only the princes were allowed to choose their husband through the स्वयंवर ceremony. सिर्फ जो प्रिंसेस होती थी उस समय, राजकुमारियां, उनको अपना हस्बैंड चूज करने का अधिकार होता था स्वयं सेरेमनी के द्वारा. Now our next one topic is economical life in the early medieval period. So what was the condition of economical life? आर्थिक स्थिति कैसी थी लोगों के का, आर्थिक जीवन कैसा था अर्ली medieval period के दौरान. So the main occupation of people was agriculture during the early medieval period. लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन था, रोजगार था, वो क्या था? एग्रीकल्चर. During this period, trade with Southeast Asia, China and Western world increased. The textile, spices and precious stones were the main exports, and horses, precious metals and stones. एग्रीकल्चर के साथ साथ इस समय तक ट्रेड भी, व्यापार भी हमने दूसरे देशों के साथ शुरू कर दिया था, जैसे कि चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. और मेनली हम किन चीज़ों का ट्रेड करते थे? दैट वाज टेक्सटाइल, यहाँ बने हुए कपड़ों का, एंड स्पाइसेस, मसालों का, प्रेशियस स्टोन्स एंड हॉर्सेस एंड प्रेशियस मेटल्स. सो ईच किंग issued his own coins because there were many Rajput clans. तो हर एक राजा अपने अलग सिक्के जारी करते थे, क्योंकि उस समय वहाँ पे कई सारे क्लान्स होते थे, तो वो अपनी मेन इम्पोर्टेंस बताने के लिए, अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए अपने नाम के सिक्के जारी करते थे. The intrinsic value of coins declined over time because there were many coins in circulation. Intrinsic means real value of the coins declined because of the fake coins in the circulation. And now our next one topic is different invasions in India during early medieval period. So many invaders entered in the northern part of India during the early medieval period. And for example, Mahmud of Ghajni, Muhammad Ghori, the main aim was to capture the wealth of India. And their main aim, उनका मुख्य जो यहाँ आने का कारण था, वो था यहाँ की दौलत को, वेल्थ को ऑक्यूपाई करना, ले जाना, हड़पना. They attacked wealthy temples and took the wealth. और इसीलिए उन्होंने जो यहाँ के बहुत ही वेल्दी, बहुत ही धनी, रिच टेम्पल्स थे, वहाँ पे अटैक किया, आक्रमण किया, और वहाँ की जितनी भी संपत्ति थी, वेल्थ थी, उसको लूट लिया. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज साउथ इंडिया, इन विच विल डिस्कस अबाउट द डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर साउथ रीजन्स. This topic will continue in our next class. Here we finished our topic. Hope you understood the topics properly. I have given you the answers of exercise and short answers again. By chance, if you have not completed your exercise and your short answers, just complete it. Read the chapter properly for your revision and go through your exercises, question answers, so that you can perform well in periodic test. Don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name with your class and section. Thank you, class.